हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिजेम चैनल में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखता हूँ मैं। आज हम बात करेंगे डू और डज के बारे में। डू एंड डज। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ। देयर आर सो मेनी students, there are so many new speakers. They what they do common mistake. So you have to remember that we should not make the mistake. So remember that. So this is very simple, but you have to remember always and keep in your mind how to use do and does. चलिए शुरू करते हैं। I, we, you, they. Okay, so I, we, you, they. He, she, it. Okay, so आपको हमेशा याद रखना चाहिए I, we, you, they। हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे? डू। I, we, you, they आप क्या करेंगे? डू यूज़ करेंगे। ही, शी, इट इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? डज। DOES, डज। ओके, सो डू एंड डज कैसे आप यूज़ करेंगे? हमेशा याद रखिए I do, we do, you do, they do। ओके, he does, she does, it does। ओके, सो हमेशा आप याद रखिए। आप मीन्स देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी लर्नर, they are started to improve their basic English. So to know more about this do or does, so you have to keep in your mind. So many people, I saw that they make that simple mistake. So what they do, they always make mistakes like I does wrong mistake। I does नहीं हो सकता है। I do, he do, very very wrong। Sometimes people say that he do, no, he does। हमेशा आप जब लिखेंगे, जब बोलेंगे I do, ओके, he does। हमेशा आप ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। डू और डज के बारे में काफ़ी सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। आई डू हमेशा ध्यान में रखिए। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में हम बात करेंगे तब हमेशा ES डज, हमेशा डू के साथ ये जोग होके मतलब ES ऐड होके आप क्या करेंगे? डज बोलेंगे। ही डज, शी डज, इट डज। ये जो तीनों चीज़ है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? डज यूज़ करेंगे। आई होप दैट दीज आर द बेसिक इंग्लिश, दीज आर द थिंग्स विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश। Just memorize, keep in your mind when you will speak you have to use proper word। okay, do not say that I does, no, very very wrong, very very big mistake। Don't। always remember that I do, we do, you do, they do, he does, she does, it does। I hope that these are the things will help you to improve your basic English। please like, share, comment and subscribe my channel। Thank you so much।